Displacement 3000 tons. KM 4.5 meters. kg 4.05 meters. MCTC 8080. HF 2 meters abaft midship. HF 2 meters abaft midship. Forward draft 4 meters. Aft draft 4.5 meters. Is dry docked. Is dry docked. Calculate. Number 1. Her RGM on taking blocks all over. Her RGM on taking blocks all over. Number 2. Her drafts fore and aft. Then her drafts fore and aft. Then number 3. Draft fore and aft, sir. Then her drafts fore and aft. Then. Okay, sir. Number 3. Her drafts fore and aft when she becomes unstable. Her drafts fore and aft when she becomes unstable. Number 3 के बाद में leave about 4-5 lines. We'll keep adding some parts to it as we progress. तो इसमें हम और ऐड करते जाएंगे. तो 4-5 लाइनें छोड़ देना. So let us start with the first part. Her residue RGM on taking blocks all over. कौन सी वाटर लाइन की बात हो रही है? 3, sir. Everybody agree? Everybody agrees कि 3 की बातें हो रही है. Okay. All right. So start with formula number 1. Initial trim. How much? 0.5 by star. 0.5 0.5 by star. by star. Okay. Final trim. 0. So TC. 0.5 by head. 0.5 by head. Convert this to centimeter. 50 centimeter. 50 centimeters by head. This
is equal to trimming moment upon MCTC. Trimming moment is nothing but P into LCF upon MCTC. So what is P equal to? P3. That is TC in centimeters into MCTC upon LCF upon LCF. Okay. What is LCF equal to in this case? Sir, 42. फिर से अच्छी तरह चेक करो. Sir, 40 meters. 40 sir, 40. 40 meters. करेक्ट. सी ये कह रहा है कि HF is 2 meters abaft midship. So मतलब ये H की लाइन है, ये मिडशिप की लाइन है. This is H. This is 2 meters abaft. And H is nothing but your L by 2. That is your 42 meter mark. You get it? Sir, yes, sir, yes, sir. ठीक है. So LCF is 40 meter mark. So calculate P3 now for formula number 1. पचास इंटू 80. सर TC 0.45 होगा ना सर? कैसे? 100 आ गया सर. 0.45 कैसे हो गया? Forward is 4 meter. Aft is 4.5. Yes sir, yes sir. Okay. So initial trim will be 0.5. So TC will be 0.5. So P3 is equal to 100 tons. Is that okay with everyone? सबका सेम आ रहा है? Yes, sir, 100. तो मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर मैं 100 टन का कार्गो को वर्चुअली डिस्चार्ज करता आफ्ट परपेंडिकुलर से, तो मेरे जहाज की जो ट्रिम थी 0.5 चेंज होती है. 2.5 चेंज होती, यानी कि मैं इवन कील हो जाता अगर मैं फ्लोट कर रहा होता पानी में. अगर ये ड्राई डॉकिंग का क्वेश्चन ना होता तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Go to formula number 2 and calculate V loss of GM. वन 1.5 सर. फिर से चेक करो. तो 0.14 0.14. 0.14. 0.14 मेरा 0.15 आ रहा है. चेक करो. Yes sir, 0.15 sir. Sir, the KM that is given in the question will consider that it is at the instant then the vessel is touching the block 3. Sorry, forward block. Absolutely right. The KM, because in this kind of a question, you are only given 1 KM. So Yes, you will sir. take whatever KM is available to you in the question.
Okay, sir. And what could be other wording? Like they will be saying it is. Other wording could have been that the km given is 4.5 and at that instant the km was found to be equal to 4.2 meters. अच्छा, okay, sir. Okay, sir. ठीक है, sir. So what does that mean? That the km That means we'll use 4.2. Then you'll use 4.2. Yes, sir. That is the meaning of it. Okay, sir. So for the virtual loss of Sir- GM, the second formula you write in the second formula is the second one. This P into kg upon W initial minus P. वो You हम can यूज use नहीं that now. करेंगे. वो हम यूज नहीं करेंगे. वो हम But यूज the नहीं answer करेंगे. should be same. But for that answer should be same now. नहीं, वो फर्क आएगा. वो फर्क आएगा. आंसर फर्क सर ये आएगा. 4.2 का क्या बताया सर, ये रिपीट करना, समझ नहीं आया. वो ये था कि इस क्वेश्चन में कोई KM1 दिया ही नहीं हुआ. यस सर, इट्स ओनली 4.5. इट्स ओनली 4.5. तो जो मुझे KM दिया हुआ है Yes, मैं वो yes. यूज करूंगा. यस करेक्ट. लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन होता जिसमें कि ये दिया Yes, sir. होता कि एट दैट इंस्टेंट द KM वाज फाउंड टू बी 4.2. ओके. पहले 4 दिया हुआ क्वेश्चन में सारा डेटा ये वाला दिया हुआ है. KM इज 4.5. फिर लास्ट में Yes. दिया हुआ है एट दैट इंस्टेंट द KM वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 4.2. Yeah. तो अब Yeah, at that instant it's given directly. तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चेंज्ड KM इज 4.2. तो इसमें मैं फिर 4.2 यूज करूँगा. ये कहने का मतलब है. Okay, sir. Okay. Virtual loss of GM. Any other doubt in this? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर सर हाँ जी. सर एक्चुअली आपकी वॉइस पहले ब्रोक हो रही थी, तो सर एक्चुअली मेरा डाउट था कि हमने ये दूसरा फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया सर, जिसमें वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम इक्वल टू पी इंटू के जी, क्योंकि अपने पास केजी का वैल्यू भी है सर एंड पी का वैल्यू हमने निकाल ली अभी. वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि दो फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. Yes, sir. एक फॉर्मूला है जो कि इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज ये यूज करती हैं. तो सिंस वी आर अ कॉमनवेल्थ कंट्री तो हम ये कॉन्सेप्ट सारे जितने भी इंटरनेशनली ये यूज होता है. EU जितनी भी कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, जितनी भी 28 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो कि यूके लेड हैं, विच इज यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, दे ऑल यूज दिस. एंड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि यूएस लेड है. वो अमेरिकन का अपना एक टंटा चलता है. तो वो उनका कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्चुअली ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. बाद में मैं बता दूंगा वो कॉन्सेप्ट क्या है. अभी इट इज टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट इट. अभी जो हम कर रहे हैं कि वाटर लाइन बदलती है, KM बदलता है, W कांस्टेंट रहता है. करेक्ट. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. Yes, sir. Yes. तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे अभी चलते हैं. देन एज वी प्रोग्रेस आई विल इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो विच इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट. बट हमें वो यूज नहीं करना है. मैं गलती से भी आपको नहीं चाहता कि ये भी यूज करो. देन इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन. हमारी किताबों में दोनों मेथड से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखाया गया है, लेकिन हम एग्जाम में एक ही मेथड यूज करना है. हम दो नहीं कर सकते. Yes. तो हमें एक ही मेथड पे चिपके रहना है बेसिकली. इज दैट ओके? Yes. तो ये बात है.
ठीक है, is that fine? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now you go to formula number 3. And calculate the RGM. पर सर इसमें वो GM सॉलिड आ रहा है ना सर, हमको तो GM फ्लूइड यूज करना है। FSC कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है। अच्छा, ओके सर, ठीक है, FSC कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो ठीक मैं है, वो ठीक है, वाला FSC वाला पार्ट मैंने सारा गायब कर दिया। ठीक है सर। जी, अगर FSC क्वेश्चन में दिया होगा तो तो मैं डायरेक्ट सॉलिड यूज पे आऊंगा, तो मैं सॉलिड आऊंगा, फिर फ्लूइड आऊंगा, फिर मैं जी वो सर, पूरा राम कहानी करूंगा। इस जी क्वेश्चन सर, में मुझे कोई वो दिया नहीं है, हाँ ओके, FSM दिया है। ठीक एक्सक्यूज है, सर, एक्सक्यूज सर, हाँ तो जी, जीएम सॉलिड और जीएम फ्लूइड दोनों सेम हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। ओके, थैंक्स। So 4.5 minus 4.05 will give me GM initial of 4.45 minus the virtual loss will give me RGM. That is 0.3 meters. ओके। So RGM is 0.3 meters. So since this RGM is positive, therefore it is okay to dry dock. This is what we wanted to find out. राइट। अगर ये नेगेटिव होती, it would not have been okay to dry dock. Then I would have on board the ship, I would have had to rework this whole thing. ट्रिम को चेंज करता, बैलेस्ट को चेंज करता, फिर से रीवर्क करता, और तब तक रीवर्क करता रहता जब तक मेरी आरजीएम पॉजिटिव नहीं आ जाती। इन रियलिटी हम जहाज पे क्या करते हैं, जो हमारे को एक डॉकिंग कंडीशन दी हुई होती है स्टेबिलिटी बुकलेट में, उसके नियरली हम पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें पता है कि किस ड्राफ्ट पे उस वक्त आरजीएम क्या है। So we try to be as close to that as possible. This is what we do in reality on board, and therefore we calculate the RGM with that. and sir in that case RGM value is already calculated and we We come just closer. we can try to come closer to that. Okay. This is what we do on board. Okay, let's go to the second part of the question. Second part of the question क्या कहता है? What does the second part of the question say? ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड ऑफ देन Then का मतलब कौन सी वाटर लाइन की बातें हो रही हैं? वाटर लाइन 4
Waterline 3, sir. When Waterline the vessel is sitting on when the critical moment is finished. Correct. So we are talking all about waterline 3 right now. तो इस मोमेंट पे इस वक्त वाटरलाइन 3 पे मेरा ड्राफ्ट क्या है, मुझे वो चाहिए. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. जहाज जब अंदर डॉक के अंदर घुसा तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट क्या था. So I'm writing the formula. Now I'm revising volume 2 trim second mates का. Draft aft minus correction is equal to draft aft minus for stern plus for head. Correct? Trim into LCF upon LBP. Draft aft 4.5 minus trim 0.5 LCF 40 LBP 84. So initial hydrostatic draft. सर इसमें ड्राफ्ट तो अपने पास दिया हुआ है ना सर, इनिशियल 4 and 4.5. ये तो इनिशियल था ना 1 पे, वाटरलाइन 1 पे था ना. यस सर. 4.26 4.26 है. 4.26. 4.26. In MMD we always go for 3 decimal places. 4.262 सर. करेक्ट. सो जब मैं ड्राइडॉक में एंटर किया इस ट्रिम पे तो उस वक्त मेरा ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 4.262 था. फिर उसके बाद मेरा टच डाउन हुआ पीछे, उसके बाद में पानी और गिरा, मैं इवन कील हुआ. अब मेरा कितना ड्राफ्ट है, तो ये मेरा इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट था. मेरी रिडक्शन इन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट जिसे मैं मीन राइज भी कहता हूं will be nothing but P upon TPC. That will be my mean rise. Mean rise is equal to W upon small w upon TPC. Small w is the P. So P upon TPC is equal to 100 upon 12. 8.33 8.333 sir. 8.333. This will be in centimeters. ये सेंटीमीटर में होगा. करेक्ट. यूनिट्स को चेक कर लो. P is tons, TPC is tons per centimeter. Tons cancel, centimeter goes on top. So mean rise or reduction is going to be in centimeter. So therefore, convert this to meter. 0.083 meter. Moving this 2 decimals to the left. Therefore, final hydrostatic draft will be equal to 4.262 minus 0.083 is equal to how much? $4.179.
4.179. This is the hydrostatic draft on taking blocks all over. Since she is already on even keel at this stage, trim is 0. Therefore, the draft forward at this stage will be equal to the draft aft at this stage, will be equal to dock water height at this stage, is equal to the hydrostatic draft at this stage, is equal to 4.179 meters. This is your answer. सर ये इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कब का है सर? ये जब स्टर्न फ्रेम पे ब्लॉक टच हुआ है? जब जब वाटर लाइन 1 पे जहाज अंदर घुसा, जब वाटर लाइन 1 पे जहाज अंदर घुसा तो ये था. And this answer will be at sir waterline number 3. And this answer is at waterline number 3 when she has touched all over on the blocks. So मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूं कि इनिशियली जब जहाज आया तो 1 पे आया, फिर जब पीछे में टच किया क्रिटिकल पीरियड कमेंस्ड, उस वक्त भी ड्राफ्ट्स मेरे 4 और 4.5 ही थे. हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मेरा 4.262 था. उसके बाद डॉक ने पानी पंप आउट करना शुरू किया, मेरी ट्रिम बदलने लगी. इस दौरान में मेरा जो पी है वो 100 टन का है. तो 100 टन का अगर मैंने वर्चुअल कार्गो को डिस्चार्ज किया होता तो मेरा जहाज बॉडीली राइज किया होता बाय 8.33 सेंटीमीटर्स. एंड साइमल्टेनियसली इस पी की वजह से मैं इवन कील पे भी आ गया. तो देयरफॉर मेरा फाइनल जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है विल बी 4.179. बट क्योंकि मैं इस वक्त इवन कील पे आ गया हूं तो मेरा आगे का ड्राफ्ट भी 4.179 होगा, पीछे का भी होगा, डॉक वाटर हाइट भी मेरी उतनी होगी और वही मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी होगा. यानी कि मैं वाटर लाइन नंबर 3 पे हूं. Is that okay or no? सर आपने क्या लिखा था मीन राइज के ऊपर? क्या लिखा था इन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट? Reduction in hydrostatic draft. वो बताइए. बेसिकली द मीन राइज वाला जो हमारा फॉर्मूला था, जो मीन राइज का, वाज नथिंग बट स्मॉल w अपॉन टीपीसी, जो हम कार्गो में यूज करते थे कार्गो डिस्चार्जिंग में. यहाँ पे वो स्मॉल w मेरा p बन गया, तो p अपॉन टीपीसी हो गया. वही मेरी मीन रिडक्शन ऑफ ड्राफ्ट होगी. सर एक चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा था सर. जब एक्चुअली हम डिस्चार्ज करेंगे वेट पीछे से तो पीछे से भी ऊपर आएगा जहाज, और लेकिन यहाँ पे ट्रिम भी बदलेगी. अगर ये मेरा सर जहाज ट्रिम अगर भी मेरा बदलेगी. जहाज नॉर्मल अगर फ्लोट कर रहा होता, अगर मैं ऐसे नॉर्मल पानी में फ्लोट कर रहा होता और अगर मैंने कोई कार्गो पीछे से डिस्चार्ज किया होता 100 टन, जी तो दो फोर्सेस मेरे जहाज पे एक्ट करते. एक, मेरा जहाज बॉडीली राइज करता, तो बॉडीली राइज करा 8.33 सेंटीमीटर. साइमल्टेनियसली मेरा जहाज एक ट्रिम चेंज भी करता. तो मैं ये दोनों फोर्सेस को लगा रहा हूं जहाज पे. बॉडीली राइज भी कर रहा है और ट्रिम चेंज भी कर रहा है. ट्रिम चेंज कर रहा है वो पी टन्स के लोकेशन की वजह से, वो ट्रिमिंग मोमेंट की वजह से.
वो ट्रिम चेंज हो रही है और बॉडीली राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ द टीपीसी, बिकॉज मैं बॉडीली एक वेट उठा रहा हूँ जहाज से, कहीं से भी उठाऊं। ओके सर। सर जी, ये जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है ये मिडशिप में होगा कि सेंटर ऑफ रोटेशन पे होगा? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट की डेफिनेशन है ड्राफ्ट एट COF, ड्राफ्ट एट COF। तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन पे है। ओके। और दिस वुड बी सेम एज मीन ड्राफ्ट आल्सो? No, this is not the same as mean draft. Mean draft is forward plus half divided by 2. ओके सर। वो बॉक्स शेप वेसल में यूज होता है ना, तो यस सो उसमें यहाँ पे तो बिकॉज अवर वाटर प्लेन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यस। but water plane area is not the same at that draft. Therefore, it is not your same as mean draft. Mean draft is different. ओके सर, थैंक यू। ठीक है, is that okay? यस सर। Okay. So एक काम करते हैं, let us अभी पहले let us absorb this much जितना आज किया है, इसी को रिवाइज करो, इसी को ही try to do this and understand this concept कि जो हमने किया है, ताकि you don't lose out on this part कि ये क्या हो रहा है, so just इसी को just revise all these formulas, revise all these questions, ये जो हमने अभी तक किए हैं या आज जो किया है, इसको एक बार जरा रिवाइज कर लो प्लीज। जो हमने क्लास में किया बस उसी को करना और मदद करना। so at least you ओके get सर। at least you get the 3 formulas in your hand and in control, and how to calculate the P for waterline 3, P3, and how to calculate the hydrostatic draft for waterline 3. You should be able to do that. ठीक है, is that okay? इसके सर, हाँ जी, सर ये फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट जो निकाला है ना सर, उसके बाद का जो स्टेप है थोड़ा सा उसको बता देना सर। ये mean rise is P upon TPC. So initial hydrostatic draft minus the mean rise, ये सेंटीमीटर में आया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, this minus this, final hydrostatic draft is initial hydrostatic draft minus the mean rise, will give you the final hydrostatic draft, which is your hydrostatic draft on taking blocks all over. Since when vessel is already on the blocks, draft forward is equal to draft aft is equal to dock water height is equal to hydrostatic draft. हमने waterline 3 में ये लिखा था inference में. So therefore मेरा draft now will be 4.179 even key. ओके, थैंक यू सर, अंडरस्टूड।